Hello students, today we are going to discuss about Dickmann reaction. Intramolecular Claisen condensation is called Dickmann reaction or Dickmann cyclization. Claisen condensation के बारे में मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया है. उसमें क्या होता है, two molecules of ester in the presence of strong base condensed with each other and formation of beta keto ester takes place is called as Claisen condensation reaction. उसमें क्या होता है कि दो ईस्टर के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन होती है. और अगर दो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर, तो उसे हम डिकमन रिएक्शन और डिकमन साइक्लाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बीटा कीटो ईस्टर होता है और वो साइक्लिक होता है. Products of this reaction are cyclic beta ketone derivatives. This is our general reaction. Here, n means number of carbon atoms or number of CH2, where 2, 3, 4 or etc. But esters having 6, 7 or 8 carbon atoms gives stable rings, or 9, 12 carbons are very low. That means yield of that carbons or that reaction is very low. Okay, so let's talk about the mechanism of this reaction. Here base we sodium ethoxide, sodium hydroxide or potassium tertiary butoxide can also be used. So this is the simple mechanism. Here C2H5ONA, that means sodium ethoxide, act as a base. It absorbs acidic hydrogen from the ester like this. Here is the formation of carbanion takes place. Then this carbanion attack on the carbonyl carbon of the second ester functional group like this. Okay, so this is our intermediate. Then further reaction like this. So here we can see formation of cyclic beta keto ester takes place, or cyclization takes place. It's called as Dickmann reaction, or this is the mechanism of Dickmann reaction. This is the simple mechanism of Dickmann reaction. So let's talk about the applications of Dickmann reaction. So these are the applications. First application is synthesis of steroids. This is our structure of steroid, one of the steroid. Here you can see here other rings are attached, that means steroids. यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि जिस रिंग पे वो रिएक्शन होती है वही मैंने दिखाया है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस. ओके, तो हियर C2H5ONA, that means base, attack on the acidic hydrogen, and here is the formation of carbanion takes place. Further, this carbanion attack on the carbonyl carbon of the ester, and our Dickmann product is formed like this. Okay, this is 5-membered ring. Further, the hydrolysis and decarboxylation, our steroids is formed. This is our steroid. Then another factor, effects of experimental conditions. Here it is also important. Here NaH and benzene, that means a protic solvent is used here. Sodium hydride takes acidic hydrogen from this carbon, okay. So यहाँ पे हमारा कार्बोनियन तैयार हो जाता है. उसके बाद दिस कार्बोनियन अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड द फॉर्मेशन ऑफ 6-membered रिंग इज फॉर्म. सो ये पहले केस में होता है. जैसे हम एक्सपेरिमेंटल की कंडीशंस चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा C2H5ONA लिया और C2H5OH विच इज़ द प्रोटिक सॉल्वेंट, ये हमने यूज़ किया यहाँ पे, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे नहीं अटैक करता. दिस बेस, दैट मीन्स सोडियम इथॉक्साइड, अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन, दैट मीन्स टेक्स दिस हाइड्रोजन, and formation of carbanion takes place here, and this carbanion
attack on these. Here you can see these carbonyl carbon like this. Okay, this carbonyl carbon. So the formation of 5-membered ring takes place. आप इसको घर पे भी आप इसको नोटबुक में करके देखिए और आपको पता चल जाएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.